दोस्तों आज मैं आपको सोयल प्लेट लोड टेस्ट से 50 क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताने वाला हूं जो कि एग्जाम के लिए और आपका इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों होता क्या, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस समय पर क्या होता है कि प्लेट लोड टेस्ट से सिर्फ 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो और आप एग्जाम में जाते हो तो आप देखते हो कि आपका क्वेश्चन बना ही नहीं। तो यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ प्लेट लोड से 50 क्वेश्चन एंड आंसर्स बताने वाला हूँ। अगर सोयल प्लेट लोड टेस्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप आसानी से टिक कर पाओगे और इसका आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोयल प्लेट लोड टेस्ट के लिए हम यूज करने वाले हैं आईएस कोड 1888 टू 1982। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि सिर्फ प्लेट लोड टेस्ट से है। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। आखिर प्लेट लोड टेस्ट किया क्यों जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है टू डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ सॉइल अंडर गिवन लोड। दोस्तों हम प्लेट लोड टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो जो सॉइल है वो कितना लोड बियर कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच आईएस कोड स्पेसिफाई प्लेट लोड टेस्ट प्रोसीजर। इसका आंसर है आईएस 1888 टू 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल टेस्ट इज द प्लेट लोड टेस्ट। इसका आंसर है इट इज एन इन सीटू फील्ड टेस्ट। ये टेस्ट फील्ड पे किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द टिपिकल प्लेट साइज यूज्ड इन द रिजल्ट। इसका आंसर है 300 mm टू 750 डायमीटर स्टील प्लेट ऑफ 25 टू 50 mm थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द शेप ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट। इट कैन बी सर्कुलर और स्क्वायर। व्हाट इज द मिनिमम पीट साइज। पीट शुड बी 5 times द साइज ऑफ प्लेट। नेक्स्ट है at what depth is the test performed, at foundation depth or at the level of proposed footing. Which equipment applies the load? A hydraulic jack applies the load. What provides reaction to the jack? A loaded platform or truck acts as a reaction system. What instrument measures settlement? Dial gauge with 0.01 mm sensitivity. What is the least count of dial gauge? 0.01 mm। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका इंटरव्यू में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज पता रहना चाहिए। अब एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको सभी चीज याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द प्लेट लेवल। ठीक है, यूजिंग अ स्प्रिट लेवल एंड सैंड बेड एट द बॉटम ऑफ द पिट। व्हाट पैरामीटर इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस इन द ग्राफ। सेटलमेंट इन mm। What parameter is plotted on the y-axis? Load intensity in kilonewton per meter square. How is load applied? Load is applied in increment and reading taken after each state. How long is each load maintained? Until the rate of settlement becomes negligible, usually 1 hour. What is the typical number of load increments? 6 to 8 increments up to failure. What is the failure point on the curve? The point where settlement increases rapidly with little load increment. What is the formula for shape bearing capacity? तो shape bearing capacity का फॉर्मूला होता है Q shape equal to Q ultimate, मतलब कि ultimate load divided by factor of safety. What factor of safety is used? Generally 2.5 to 3. What is the general allowable settlement for RCC footing? 25 mm. What is the allowable settlement for brick masonry? 50 mm. What is the typical loading rate? About 0.05 to 0.1 kg per centimeter square per minute. What is the purpose of the unloading cycle? To observe the elastic recovery of the soil. What is the ultimate bearing capacity? The maximum pressure soil can bear before failure. What is shape bearing capacity? It is ultimate bearing capacity divided by factor of safety. Why is sand layer used below plate? To make the surface level and uniform. How many dial gauges are used? At least 2 on opposite sides of the plate. What is the main disadvantage of plate load test? It gives local results not representative of the large area. What type of soil gives immediate settlement? Sandy soil. What type of soil shows time dependent settlement? Clayey soil. What is the standard rate of loading? About 0.02 kg per centimeter square. What are typical plate diameters used? 300 mm, 450 mm, 600 mm and 750 mm. What does the curve of load versus settlement indicate?
It shows elastic and plastic behavior of soil. What is the aim of conducting this test? To determine SBC and settlement characteristic of soil. Can the test be used for deep foundations? No, it's usually for shallow foundations. What kind of reaction system can be used? Candlestick system or trust system? What is the minimum accuracy required for settlement reading? 0.01 mm. What is the common duration for one complete test? About 8 to 10 hours. How many times can load be repeated? Load and unload cycles are done twice for accuracy. What is observed during unloading? Elastic rebound of soil. What should be the minimum edge distance of a pit? At least 2.5 times the plate width from pit wall. How is bearing capacity calculated graphically? By tangent intersection method on load settlement curve. What are the two zones in load settlement curve? Linear elastic zone and non-linear plastic zone. What is the approximate SBC for medium dense and sand? 200 to 300 kilonewton per meter square. What type of soil has highest bearing capacity? Gravelly soil or dense sand? What precaution should be taken for test pit? Ensure no disturbance or water seepage during test. What is the main use of test result? Foundation design and selection of footing type. How is data recorded? In tabular format with load, time and settlement reading. What is the final outcome of the plate load test? Safe bearing capacity and permissible settlement of soil. तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, ये सब दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी और आपका एग्जाम के लिए भी। आएगा तो एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ही से आएगा, लेकिन अगर आपको ये सब चीज पता नहीं रहेगा है तो सब छोटा छोटा, तो वहां पर आप फंस जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।